आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों। तो द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। द्रोणा एटले गुस्सा थी, नफरत थी तेनु मन, विरक्त एटले दुखी थई गयु। कोनु? तो ममता। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्वस्थ एटले के पाणी पीधा बाद मुगल ने एटले के जे पेलो व्यक्ति ममताना द्वार पर आश्रय मांगवा आवेलो हतो तो ते व्यक्ति ने थोड़ुं सारूं लाग्युं पाणी पीधा बाद। तो एणे पछी ते स्त्रीने कह्युं, शुं कह्युं के माता माता करीने संबोधी अने शुं कह्युं के तो पछी मैं अहींयाथी जतो रहूँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। स्त्री एटले के झोपड़ी में रहती स्त्री के जेनी पासे हुमायूए आश्रय मांग्यो हतो अने हुमायूने ते रहेवानी पोते आश्रय आपवानी ना पाड़े छे ममता। एटले तो पेलो पुरुष एम पूछे छे के तो शुं हूँ अहींयाथी जतो रहूँ। पछी ए स्त्री विचार करवा मांडी अने पोताना मनमा शुं विचार करी रही हती के हूँ एक ब्राह्मणी छूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। मारे एम के मारा धर्मनो एटले के अतिथि देव सत्कार, अतिथि देवो भव एटले के आंगणे आवेलो कोईपण व्यक्ति ए भगवान समान छे। अतिथि देव एटले के अतिथि ए भगवान समान होय छे एटले के मारे ए धर्मनो पालन करवुं पड़शे अथवा तो मारे धर्मनुं पालन करवुं जोईए एवुं कोण विचारे छे? तो स्त्री। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु अहींया एम के आ मुगल छे, मुगल बादशाह छे, एम के हुमायूं छे, आवा व्यक्ति जे अत्याचारी होय छे, जे निर्दयी होय छे, आवा ज एक राजाए मारा पितानुं पण हत्या करी छे, जेना कारणे आ बधा दयाने पात्र नथी। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। परंतु हूँ एने आश्रय आपीश तो ये दया नहीं पण मारा कर्तव्यनुं पालन करीश। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। हवे ममता पोताना मनमा विचार करे छे के अतिथि देव धर्मनुं जे पालन मारे करवानुं छे, जेना कारणे मारे आ व्यक्तिने मारा घरमां आश्रय आपवो पड़शे। हूँ एक ब्राह्मणी छूँ एटले के ब्राह्मणी धर्ममां अथवा तो हिंदू धर्ममां आपणे एवी मान्यता राखता होय छे के घरे आवेलो कोईपण अतिथि ए देव समान होय छे, एटले आ धर्मनुं मारे पालन करवुं जोईए एवुं कोण विचारे छे? ममता। परंतु ए थोड़ी वार बाद एवुं पण विचारे छे के आ बधा दयाने पात्र नथी। आना ज जेवा एक राजाए मारा पितानी हत्या करेली हती एटले के मारे आवा लोको पर दया दाखववी जोईए नहीं। परंतु दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। ममता शुं विचारे छे? स्त्री के मारे दया नहीं करवानी पण मारे मारा कर्तव्यनुं पालन करवानुं छे। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। त्यारबाद मुगल पोतानी तलवार जमीन साथे टेकवीने ऊभो थई गयो। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ममताए पछी धीरेथी कह्युं के नवाई नहीं लागे के तू पण एम के जो छल कपट करशे एमां कांई ज नवाई नथी। सांभळ एम के तू ऊभो रहे। स्त्री पेला मुगल ने कहे छे। ए मुगल कोण हता? तो हुमायूं राजा हता। कोनाथी हारी गयेला? तो शेरशाहथी। हवे आगळनो पाठ जोईशुं। तो छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशघर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। पेलो व्यक्ति शू कहे छे के कदाच ममता एने एम कहे कि तारो पण शू भरोसो के तू पण मारी साथे छल कपट करे एम के ऊभो रहे। त्यारे एवी वात सांभळीने पेलो पुरुष जे हुमायूं राजा हता ते कहे छे स्त्रीने के छल एम के छल एम के तने एवुं लागे छे के हूँ छल करीश तो एम के मारे तारी झोपड़ीमां आसरो लेवो नथी। पछी ममता हूँ अहींयाथी जाऊँ छूँ। तैमूर का वंशघर स्त्री से छल करेगा। तैमूरनु वंश एम के स्त्री साथे एम के छल कपट करशे। जाता हूँ, भाग्य का खेल है के हूँ अहींयाथी जतो रहूँ छूँ एम के भाग्य नसीबनो बधो खेल छे। ममता ने कहा, ममताए कह्युं, यहाँ कौन दुर्ग है? अहींया कयो किल्लो छे? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो। एम के अहींया एम के तू छल कपट करशे तोय अहींया एक सामान्य झूंपड़ी छे, आ कोई महल नथी। तने अहींयाथी जे जोईए ते तू लई ले। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, मारे तो मारा कर्तव्यनुं पालन करवुं पड़शे। ममता कहे छे एलो पुरुष एटले के हुमायूं राजा ममतानी एवी वात पर आश्चर्य पामे छे। शुं कहे छे ममता के तारो शुं भरोसो एम के तू पण छल कपट करे तो एम के सांभळ एम के। पछी पेलो पुरुष सामे एटले के हुमायूं जवाब आपे छे, छल एम के तारे एम के तने एवी एम के मारा पर भरोसो ना होय अने तने एवुं लागतुं होय के हूँ तारी साथे छल करीश तो मारे तारा झूंपड़ीमां आश्रय लेवो नथी। अने आम कहीने हुमायूं राजा पेली स्त्रीने शुं कहे छे के हूँ अहींयाथी जाऊँ छुं।
તૈમૂરના વંશના લોકો સ્ત્રી સાથે છલ કરશે નહીં, બધો નસીબનો ખેલ છે. મમતા ત્યારબાદ કહે છે, યહાં કોણ દુર્ગ એટલે કે અહીંયા કઈ કિલ્લો છે, અહીંયા કયો મહેલ છે, આ એક ઝૂંપડી તો છે, તારે જે જોઈએ તે લઈ લે. મારે તો મારા અતિથિ દેવો ભવ એટલે કે અતિથિ દેવનો સત્કાર કરવો પડે, મારે મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવું પડશે. જાઓ ભીતર થકે હુએ પથિક, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ. जाओ भीतर એટલે કે આમ કહી મમતા પેલા જે દરવાજા પર આવેલો હુમાયુ રાજા હતા તેને શું કહે છે કે તું ઝૂંપડીમાં અંદર જતો રહે. આટલું કહીને હું તો એમ કે તું અંદર ઝૂંપડીમાં જતો રહે, તું ખૂબ થાકેલો લાગે છે. હવે તુમ ચાહે કોઈ બી હો મેં तुम्हें આશ્રય દેતો, તું ચાહે કોઈ પણ હોય. હવે મારા દ્વારા આવેલો છે એટલે અતિથિ દેવો ભવ, ધર્મનું સત્કાર કરવાનું એટલે ધર્મનું કર્તવ્યનું મારે પાલન કરવાનું છે. એટલે તું ઝોપડીમાં અંદર જતો રહે, આરામ કર, હું તને એમ કે મારી ઝોપડીમાં આશરો આપું છું. સબ अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ. બધા પોતાનો ધર્મ કર્તવ્ય છોડી દે તો શું મેં પણ છોડી દઉં. मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा. मुगल એટલે કે જે રાજા હતા હુમાયુએ, તેઓએ ચંદ્રના પ્રકાશમાં महिमामय मुखमंडल એટલે કે પ્રભાવશાળી મુખ જોયું. उसने मन ही मन नमस्कार किया. એણે મનમાં ને મનમાં પેલી સ્ત્રીને નમસ્કાર કર્યો. મમતા પાસથી તૂટી हुई दीवारों में चली गई. પાસની એટલે કે મમતા તેની ઝૂંપડીના પાસે તૂટી ફૂટી દીવારોમાં અંદર જતી રહી. દીવારોમાં એટલે કે દીવારો વચ્ચે, બે દીવારો વચ્ચે જે જગ્યા હોય ને ત્યાં. ભીતર થકે પથિકને ઝોપડી મેં વિશ્રામ કિયા. એટલે કે ઝોપડીની અંદર જે થાકેલો પથિક હતો, જે રાહમાર્ગી હતો, જે રાજા હુમાયુ હતો, એણે ઝોપડીમાં આરામ કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈશું તો પ્રભાત મેં ખંડહર કી સંધિ સે મમતાને દેખા. પ્રભાત એટલે કે સવાર થઈ ગયું અને ખંડહર એટલે કે જે તૂટેલું ફૂટેલું દિવાલ હતી, ખંડહરની દિવાલ હતી એટલે ખંડેરની દિવાલ હતી. હવે એ દિવાલ બે બાજુથી જે જોડાતી હતી તે જગ્યાએથી મમતાએ જોયું. સેંકડો અશ્વારોહી ઉસ પ્રાંત મેં ઘૂમ રહે છે. એટલે કે સેંકડો, 100ની સંખ્યામાં અશ્વારોહી એટલે કે ઘોડા પર બેહેલા સિપાહીઓ એ પ્રાંતમાં એટલે કે નગરમાં ફરી રહ્યા હતા. વહ આપની મૂર્ખતા પર સ્વયં કો કોસને લગી. તે પોતાની મૂર્ખતા પર સ્વયંને દોષ આપવા લાગી, કોસવા લાગી. એટલે કે પોતાની મૂર્ખતા એટલે કે પોતે જે મૂર્ખતા કરેલી, કઈ મૂર્ખતા કે જે પથિક હતો એને પોતાની ઝોપડીમાં આશ્રય આપેલો, જેના કારણે મમતા પોતાની જાતને કોસવા લાગી. એકાએક ઝોપડી સે નિકલકર ઉસ પથિક ને કહા, મિર્જા મેં યહાં હું. એકાએક ઝોપડીમાંથી એટલે કે રાતવાસો કરવા માટે ઝોપડીમાં જે રાજા હુમાયુ મુગલ બાદશાહ હતા તે બહાર નીકળ્યા અને તેણે કહ્યું, મિર્જા મેં અહીંયા છું. શબ્દ સુનતે ही પ્રસન્નતા की ચિત્કાર ધ્વનિ से वह प्रांत गूंज उठा. શબ્દ સાંભળતા જ પ્રસન્નતા એટલે કે ચિત્કાર ધ્વનિ એટલે કે પ્રસન્નતા ભરી અવાજ એટલે કે રાજાનો એટલે કે મુગલ બાદશાહ હુમાયુનો અવાજ સાંભળતા જ આખા પ્રાંતમાં એટલે કે આખા નગરમાં પ્રસન્નતા ભરી અવાજ થવા લાગ્યો. એટલે કે પ્રસન્નતા ભરી ચિત્કાર એટલે કે પ્રસન્નતા ભરેલો અવાજ આખા પ્રાંતમાં નગરમાં ગુંજવા લાગ્યો. મમતા અધિક ભયભીત हुई. મમતા ખૂબ ગભરાઈ ગઈ. પથિક ને કહા, વહ સ્ત્રી કહાં હૈ. મમતા ગભરાઈ ગઈ. પછી પથિક એટલે કે હુમાયુ બોલ્યા કે પેલી સ્ત્રી ક્યાં છે, ઉસે ખોજ નિકાલો, એને શોધી કાઢો. મમતા छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई. મમતા સંતાવા માટે ખૂબ જ સાવચેત થઈ ગઈ. वह मृगदाव में चली गई. मृगदाव એટલે કે શિકારીઓ से बचने के लिए मृगों के छिपने का स्थान अथवा वन. હવે જેવો પેલો પથિક એના સૈનિકને સેનાપતિ મિર્જાને આદેશ આપે છે કે પેલી સ્ત્રી ક્યાં ગઈ અને એને શોધી કાઢો. મમતા સંતાવા માટે વધુ સાવચેત થઈ ગઈ અને તે મૃગદાવમાં ચાલી ગઈ. મૃગદાવ એટલે કે શિકારીઓથી બચવા માટે મુર્ગ એટલે કે હરણ જ્યાં સંતાતું હોય એવું વન, તો એવી જગ્યાએ મમતા સંતાઈ ગઈ. દિનભર ઉસમે સે ન નીકળી. આખો દિવસ વીતી ગયો, ત્યાંથી મમતા બહાર નીકળી નહીં. સંધ્યા હો ગઈ, સાંજ થઈ. વે લોગ જાને લગે મમતાને સુના. એ બધા લોકો જવા માંડ્યા એટલે કે હુમાયુ રાજા અને તેને શોધવા આવેલા સેના એટલે કે સૈનિકો બધા જવા લાગ્યા. મમતાને સુના પથિક ઘોડે પર સવાર હોતે હુએ કહ રહા હતા. મમતાએ સાંભળ્યું. પથિક એટલે કે જે રાતવાસો કરવા માટે આશ્રય મમતાએ જેને આપેલો એ પથિક જતાં જતાં શું બોલ્યો તે મમતાએ સાંભળ્યું. એટલે કે ઘોડા પર સવાર થતાં પહેલાં એ કંઈ કહી રહ્યો હતો. એણે કહ્યું, મિર્જા
उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। पेली स्त्री ने कि जेनी झोपड़ी में मैं रातवासो करियो तेने हूँ कहीं आपी सक्यो नहीं। उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। तूटेली फूटेली झूंपड़ी जेमां ममता रहती हती, हवे ए झूंपड़ी में ममताए हुमायू राजाने आश्रय आपेलो एटले जता जता मिर्जाने आदेश आपे छे हुमायू राजा के ए स्त्रीने हूँ कंई आपी शक्यो नथी, जेथी आ तूटेली फूटेली झोपड़ीनी जग्याए तू नवी झोपड़ी बनावी देजे, कारण के विपत्ति एटले के तकलीफना समयमां मुश्केलना समयमां तेणे मने अहींया आसरो आप्यो हतो। यह स्थान भूलना मत, आ जग्या तू भूलतो नहीं। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। त्यारबाद ते त्यांथी चाल्या गया हुमायू राजा। चौसा के मुगल पठान को बहुत दिन बीत गए। चौसा युद्ध एटले के मुगल एटले के हुमायू राजा अने शेरशाह पठान वच्चे जे युद्ध थयेलुं चौसानुं, ए युद्धने घणा बधा दिवसों वीती गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। ममता हवे केटला वर्षनी थई गईली? 70 एटले के 70 वर्षनी। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। एक दिवसे पोतानी झोपड़ी में पड़ेली हती। शीतकाल का प्रभाव था। शीतकाल एटले के शियाळानी ऋतु हती अने ठंडीनो वधारे पड़तो प्रभाव देखातो हतो, एटले के ठंडी वधारे पड़ती हती। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण एटले वृद्ध, कंकाल एटले शरीर एटले के हाड़पिंजर, एना शरीरनुं जे हाड़पिंजर हतुं एनु जर्जरित थयेला शरीर खांसीथी गूंजी रह्युं हतुं। एटले के ममता 70 वर्षनी थई गईली, वृद्ध थई गईली। हवे एनु शरीर जे कंकाल बनी गयेलुं एटले के एकदम सुकाई गयेली हती, तो तेनुं आखुं शरीर जीर्ण एटले जर्जरित थई गयुं हतुं अने एनुं आखुं शरीर खांसीना लीधे गूंजी रह्युं हतुं। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा करवा माटे गामडानी 2-3 स्त्रीओ तेने घेरीने बैठी हती, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। केम? ममता ज्यारे खांसी थी तकलीफ में हती एटले के खांसी खाई रही हती, वृद्ध थई गई हती, बीमार हती, ते समये गामडानी केटलीक स्त्रीओ तेनी आसपास घेरीने बैठी हती। केम? तो ममता आजीवन एटले के आ बधाना सुख दुखनी सहभागिनी एटले के भागीदार रही चूकी हती। एटले के बधाना सुख दुखमां ममता दरेकनो साथ आपती हती। एटले एना जीवनमां ज्यारे तकलीफनो समय आव्यो त्यारे ए समये एटले के ममता ज्यारे बीमार हती तो ए समये पण तेने घेरीने 2-3 स्त्रीओ बैठेली हती। ममता ने जल पीना चाहा। ममताए पानी पीवानी इच्छा करी। एक स्त्री ने सीपी से जल पाया, एक स्त्रीए तेने पानी पायु। हवे सहसा एक अश्वारोही उसी झूंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। सहसा एटले अचानक एक अश्वारोही एटले घोड़ा पर सवार व्यक्ति ए झोपड़ीना द्वार पर आवेलो दिखाई पड़्यो।